ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। सो आज हम लोग 1.6 फर्स्ट कैंटो के छठवां चैप्टर हम लोग जाएंगे, विच इज कन्वर्सेशन फ्रॉम बिटवीन नारद एंड व्यासदेव। सो हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था, व्यासदेव ने सब कुछ लिखा एंड सब पूरा पुराणास और उपनिषद और सब लिखे। ही वाज स्टिल नॉट कंटेंटेड, तो ही वाज लिटिल कंफ्यूज्ड कि मतलब और नॉट कंफ्यूज, आई वुड से ही वाज नॉट फुली सेटिस्फाइड। उसका हार्ट में अभी वो हॉलो फीलिंग था। सो ही कुडंट रियलाइज, ही कुडंट अंडरस्टैंड क्या था, किसके वजह से, क्योंकि ही स्टार्टेड गिविंग हिमसेल्फ डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस कि मैंने तो सब, मैं रिचुअल सब बड़ा अच्छे से फॉलो करता हूँ, आई डू दिस आई डू दैट। ऐसा करने के बावजूद भी वाई इज दैट आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, क्या हो सकता है करके, एंड आई एम डूइंग ऑल फॉर द मैनकाइंड। ऐसा भी नहीं कि मैं पेज 3 पे, कल टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज 3 में मेरा फोटो छपेगा, नो। सो व्हाट इज दैट, इट इज नाउ स्टॉपिंग मी एक्चुअली फीलिंग दैट प्लेजर। एक प्रभु जैसा बोल रहे थे इस्कॉन के, उन्होंने 3 बुक लिखा, लेकिन 3 बुक लिख के भी उनको पूरा सेटिस्फेक्शन मिला। उनको ऐसा लगता था यार, मतलब अभी मैंने 3 बुक का ऑथर हूँ करके। बट व्यासदेव ने इतने सारे बुक्स लिख के, जो मनुष्य एक लाइफ टाइम में भी नहीं पढ़ सकता, बट स्टिल ही वाज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। सो व्हाट वाज द रीजन? एंड जब हम वी आर इन डाउट, वी शुड अप्रोच गुरु। सो ये केस में गुरु हिमसेल्फ ही probably must have thought of Narad Muni when he was in such a state, and Narad Muni appeared over there. Or then there were some discussions around it, and he asked relevant questions to Narad Muni. और उन्होंने उनके लाइफ, हम लोग लास्ट इसमें देखे थे, उनके लाइफ के बारे में बात किया था कि उनको कैसे क्या, काफी कुछ हम लोग देखा था। सो वी विल टॉक अबाउट, विल कंटिन्यू द डिस्कशन बिटवीन नारद मुनि एंड व्यासदेव इन दिस 6th चैप्टर। सो यहाँ पे नारद मुनि का वी कैन डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 5 सेक्शंस। तो एक सेक्शन में व्यासदेव इज आस्किंग अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस है। सो यहाँ पे व्यासदेव नारद मुनि को रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जो एक स्पिरिचुअल बंदे, मतलब द सीरियस स्पिरिचुअलिस्ट शुड आस्क। देन लॉर्ड अपियरेंस टू नारदा के बारे में हम लोग देखेंगे बाकी के श्लोका में, नेक्स्ट श्लोका में, कुछ सेट ऑफ श्लोकास में। Then what Lord instructs Narada, which means Lord, I mean, once he appeared, what instruction does he give to Narada, and how does Narada achieve perfection, and then what does Narada conclude and he departs. So this is what we will see in today's discussion. Monica Mataji, do you want to take up this first slide? You're on mute. Yeah, Mataji. Yes, Prabhuji. Srimad Bhagavatam 1.6. Shuta said, O Brahmanas, thus hearing all about Sri Narada's birth and activities, Vyasadev, the incarnation of God and son of Satyavati, inquired as follows. Wait 1 second. Sri Vyasadev said, what did you, Narada, do after the departure of the great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth? Second, O son of Brahma, how did you pass your life after initiation, and how did you attain this body, having quit your old one in due course? Third, O great sage, time annihilates everything in due course. So how is it that this subject matter, which happened prior to this day of Brahma, is still fresh in your memory, undisturbed by time? Sri Narada said, the great sages who had imparted scientific knowledge of transcendence to me departed for other places, and I had to pass my life in this way. I was the only son of my mother, who was not only a simple woman but a maidservant as well. Since I was her only offspring, she had no other alternative to protection. She bound me with the tie of affection. She wanted
She wanted to look after my maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for me. The world is under the full control of Supreme Lord. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. When I was a mere child of 5 years, I lived in a Brahman school. I was dependent on my mother's affection. And had no experience of different lands. Once upon a time, my poor mother, when going out one night to milk a cow, was bitten on the leg by a serpent. Influenced by supreme time, I took this as a special mercy of the Lord, who always desires benediction for his devotee. And so thinking, I started for the north. हरि बोल. थैंक यू माता जी. हरि बोल, हरि बोल. So यहाँ पे we can see that now see how nested this is. आप लोगों ने इंसेप्शन मूवी देखा क्या? बाय चांस किसी ने देखा इंसेप्शन मूवी? एनीवन? नहीं. ऋचा, रोहित, राखी माता जी, आपने देखा? मोनिका माता जी? नहीं. सो वहां पे देयर इज अ फंडा वेरिन हम लोग सपने में जाके हम लोग दूसरों के कुछ आई मीन वी कैन हाँ. एक्चुअली डू समथिंग फॉर द पर्सन. आई मीन we can probably attack him या फिर we can steal some secrets or implant an idea in his mind. Yes. नहीं. हाँ. Yeah. तो वहां पे कैसे एक सपने के लास्ट में, एक सपने के अंदर दूसरा सपना, दूसरा सपने में और एक सपना देखते वो लोग, वो सपने में और एक सपना देखते, तो ऐसे करके सपने में सपना देखते. तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ना जो डिस्कशन है वो डिस्कशन में और एक डिस्कशन, वो डिस्कशन में और एक डिस्कशन, ऐसे मैंने वो भागवतम का वो पार्ट पढ़ा नहीं, बट वन वैष्णव सेज दैट ऐसे 7 लेयर्स, 7 नेस्टेड लेयर्स तक है, मतलब डिस्कशन 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 ऐसे 7 लेयर तक है. तो यहाँ पे भी हम लोग 3 लेयर देखेंगे ये चैप्टर में. तो यहाँ पे सुत और शौनक ऋषि बात कर रहे हैं, और उनके बातों में व्यासदेव नारद मुनि बात कर रहे हैं, और उनके बातों में नारद मुनि और विष्णु बात कर रहे हैं. सो 3 लेयर यहाँ पे नेक्स्ट है. सो इट विल इसके बाद इन सम ऑफ द चैप्टर्स और एक लेवल बढ़ेगा, सम ऑफ द चैप्टर और 2 लेवल बढ़ेंगे. सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कीप ट्रैक ऑफ दैट. सो यहाँ पे so there were 3 questions that were being asked by Vyasdev. नारद मुनि को 3 क्वेश्चंस पूछे थे. So what are these questions? एक है what did you do after भक्ति वेदांता's departure? मतलब भक्ति वेदांत जब चले गए थे तो उनके बाद आपने क्या किया था? सब साधु सब चले गए थे. That was one question. लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि मैं साधुओं के साथ बढ़ता, उनका जो रेमिनेंट्स था, प्रसाद था, महाप्रसाद, वो मैं खाता था, उनको आशीर्वाद दिया गया था साधुओं से. तो उन्होंने बोला कि यार जब वो लोग गए उसके बाद आपने क्या किया? आपने मतलब बेसिकली आपकी साधना कैसे मेंटेन की? So he wanted to follow in the Narada's footstep in order to attain the same perfect stage of life. This desire to inquire from the spiritual master is an essential factor in the progressive path. So usually बहुत लोग सरेंडर, गुरु को सरेंडर हो जाओ, एंड वो चीज को समझते हैं कि we should not ask anything, just whatever Guru says we take it. So idea is we should not challenge Guru, but we should inquire from Guru submissively. We should inquire. We should try to understand कि क्या, कैसे, ये कैसे समझूं मैं? I am not able to understand. Can you please help me? So यहाँ पे भी व्यासदेव नारद मुनि को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको समझने के लिए. सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि व्यासदेव ने how did you pass your life after initiation and how did you attain this body? Again one more important question. Initiation के बाद आपने ये लाइफ कैसे अटेन किया? How did you maintain द स्पिरिचुअल जो आपने अटेंड किया था वो कैसे आपने मेंटेन किया? हाउ यू प्रोग्रेस? नाउ नारदा बिकेम सो परफेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ इटर्नल लाइफ, ब्लिस एंड नॉलेज इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट. श्री व्यासदेव डिजायर्ड हिम टू डिस्क्लोज द फैक्ट फॉर एवरीवन सेटिस्फैक्शन. और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो है हाउ डिड यू रिमेम्बर दैट विच हैपेंड प्रायर टू दिस डे ऑफ ब्रह्मा? मतलब अभी तो ये लाइफ ऑफ ब्रह्मा का तो ठीक है, बट यू आर सेइंग दिस हैपेंड इन द लास्ट लाइफ ऑफ ब्रह्मा, राइट? पिछले कल्प में जो हुआ था ब्रह्मा का हर एक दिन को कल्प कहा जाता है. तो ये जो नारद मुनि जो स्टोरी बताते हैं लास्ट चैप्टर में, ही वाज सेइंग इन द प्रीवियस कल्प ये ऐसा पास्ट टाइम हुआ था. सो ही इज आस्किंग कि आपको प्रीवियस कल्पा का कैसा याद है? प्रीवियस ब्रह्मा का लोगों को तो पिछले जन्म का याद नहीं, आपको ब्रह्मा के पिछले दिन का कैसे याद है?
So as spirit, even the spiritual consciousness is not annihilated with the body. Shri Narada developed this spiritual consciousness even when he had this material body in the previous kalpa. ठीक है, सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. इफ यू सी पूरा भागवतम में देयर आर मेनी क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के बेसिस पे आंसर है. ऐसा नहीं कि कोई आके बीच में घुस जाता है, बोलता है कि भाई आज मेरे को फिलोसफी झाड़ने का मूड हो रहा है, लेट्स ऑल सिट टुगेदर. नो, दिस इज नॉट इट हैपेंस. ना ही कोई गलती कर रहा है उसको जाके समझाने रहे. दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी ऑफ्टन. सो यहाँ पे questions are being asked by these elevated people. This is important. कौन पूछ रहा है question? Elevated people, and answers are being given by the other set of elevated people. So they are all elevated. Vyasdev is elevated, Narad Muni elevated, but they are doing so that people like us can actually take advantage of it. ठीक है? तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है कि साधुओं के जाने के बाद आपने क्या किया, आपका इनिशिएशन के पास आपने जो आपको दीक्षा मिला था उसके बाद आपने कैसा लाइफ स्पेंड किया, ये सब जानना जरूरी है, सो दैट वी आल्सो फॉलो द सेम फुटस्टेप्स. एंड देन आपको कैसे पिछले जन्म का याद था, बिकॉज यूजुअली पीपल विल हैव दिस डाउट. सो ऑन बिहाफ ऑफ अस, व्यासदेव इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू नारदा. So the great sages, वहां पे क्या बोला, by the grace of great sages there was a tangible change in his life. Although he was only a boy of 5 years old, actual association of devotees bring about a quick change in life for spiritual realization. ये प्रभुपाद पर्पट में बताते कि साधुओं के संग से, साधु संग जब मिलता है तब अपने लाइफ में काफी चेंज होता है. एंड दैट प्रॉब्ली वी मस्ट हैव सीन. हम लोग एवरी फ्राइडे सिर्फ मिल रहे 1 घंटा 2 घंटा, बट that too remote. But even though that is the case, when we discuss about shastras, साधु संग मतलब we discuss about shastras. साधु संग मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिवोटी के साथ बैठे हम लोग क्रिकेट मैच बात कर रहे. नो, then that is not sadhu sangha. तो when we sit with devotee we speak about Krishna, and probably I'm sure that आप लोगों ने भी लाइफ में, even it may be small, you might experience a different change the way you perceive things and all, right? So this is how it happens. There is a tangible change. You can actually experience it. ऐसा नहीं कि हुआ बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है तुम्हें अभी नहीं बाद में पता चलेगा. जैसे कुछ खाने के वक्त बोलते हैं अंदर बिल्डअप हो रहा है तुम्हें बाद में पता चलेगा, मसल्स वगैरह बिल्डअप हो रहे हैं, टाइम लगेगा. यहाँ पे वी कैन हैव द टेंजिबल चेंजेस. हम लोग देख सकते हैं हाँ ये चेंज, मैं पहले ऐसे सिचुएशन को ऐसे डील करता था, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ बट आई थिंक आई एम स्टिल बेटर देन व्हाट आई वाज अर्लियर. प्रॉब्ली दिस इज व्हाट प्रॉब्ली मेनी पीपल सी चेंज. सो विद साधु संग, विद कृष्णा, जब हम लोग इतना छोटा करते तो हम लोग चेंज देख पा रहे हो. व्हेन वी आर कंप्लीटली इन एसोसिएशन रियली प्योर डिवोटीज एंड वी स्पेंड टाइम मोर एंड मोर टाइम विद देम, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि उसका इंपैक्ट कितना होगा अपने लाइफ पे. प्रभुपादा और एक अच्छा स्टेटमेंट मारते परपट में, एक्चुअल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ब्रिंग अबाउट ए क्विक चेंज इन लाइफ फॉर स्पिरिचुअल रिलेशन. क्विक इज द अंडरलाइंग वर्ड. हम लोग खुद ही पढ़ेंगे खुद करेंगे is okay, और कभी कभार मिलते हैं, that's fine, that will bring some change, but that will be slow gradual change. We do not know how much is our lifetime. कभी बचेंगे, कभी मतलब कितने टाइम तक बचेंगे, we have no idea. हम लोग प्लान कर रहे हैं 10 साल बाद LIC का इंश्योरेंस मैच्योर हो जाएगा, बट वी डू नॉट नो कि हम लोग 1 साल बाद भी इंश्योरेंस मतलब हम लोग कुछ देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे. So we have to do something quick. This is very this is as Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Guru Maharaj of Srila Prabhupada. He says this is an emergency situation. जब प्रभुपाद उनको मिले थे फर्स्ट टाइम, तो प्रभुपाद ने बोला कि प्रभुपाद he was not a I mean a full time ISKCON devotee at, और तभी ISKCON नहीं था, Gaudiya Math devotee at that time. So he was more into the national movement. तो वो देश के लिए लड़ रहे थे. तो उनके बाद वो जब उन्होंने बोला सरस्वती ठाकुर ने कि आप जैसे नौजवान को जो हु नो इंग्लिश एंड ऑल, दे शुड एक्चुअली प्रीच इन इंग्लिश. तो उन्होंने बोला बट दिस इज नॉट द टाइम, क्योंकि अभी देश को फ्रीडम चाहिए करके. तो सरस्वती ठाकुर बोले दैट फ्रीडम इज स्टिल फाइन, दिस इज इवन मोर बेटर फ्रीडम, एंड दिस इज एन इमरजेंसी. ही यूज द वर्ड दिस इज एन इमरजेंसी, बिकॉज लाइफ कभी जाएगा पता नहीं चलेगा. इट इज एक्चुअली एन इमरजेंसी. पूजा ने एक वीडियो पोस्ट किया था ग्रुप में, इफ यू हैव सीन. बात करते करते दोस वर ऑल कॉट ऑन कैमरा, बात करते करते किसी को कुछ दे काइंड ऑफ पास्ड आउट, they might probably got a cardiac arrest or something. And I could see a couple of people were actually quite young, शायद हम लोग से भी यंग रहेंगे. तो they got this cardiac arrest. So it is very dangerous. My friend, I must have mentioned earlier, मेरी फ्रेंड की वाइफ थी, उसके ऑफिस में एक बंदा था इन हिज late 20s, 28, 29, 30 के आसपास रहेगा. So he
he entered in lift, second floor. By the time the lift reached ground floor, he was dead on the floor, heart attack se. So this is how unpredictable life is, and that is why it is an emergency situation. So we have to do something that will get us quick results, and that is what Prabhupada says. Actual association of devotees bring us quick change. Actual association matlab basically we keep listening from them about Hari Katha. They themselves are basically involved in Krishna all the time. So that is what is required for spiritual realization. And then last point is when his mother was killed by the snake, unfortunately many people would have they would have started cursing the Lord कि मैंने इतना सब किया, तूने क्या किया मेरे लिए, यही दिन दिखाया, and all those things. There have been, I mean, we listen this in and out, and we might probably have even done that earlier in our life. एग्जाम में पेपर एक ड्रॉप होने के बाद हम लोग भगवान से बात नहीं करते, हम लोग बोलते तूने मेरे को पास नहीं करवाया, एंड फॉरगेट अबाउट समवन डाइंग. सो वी ऑलरेडी हैव डन दैट. मैंने तो बी के एग्जाम के वक्त तो बहुत बार ऐसे भगवान से कट्टी लेके बैठा था. सो दिस हैपेंस बिकॉज आवर फिलोसॉफी वाज नॉट राइट. We did not understand how this full system works. And when we are associated with devotees, जब हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं, हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हमारा परसेप्शन लाइफ को लेके and how this system works become perfect. Narad Muni at the age of 5 he received that perfection. We are yet very far away from that. He received that perfection कि उसकी एक लौती माँ, मतलब उसके फैमिली में या उसके फैमिली में उसके लाइफ में और कोई नहीं था. डैड नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, कोई नहीं था. It was only mom. So mom basically we can understand कि कितना attachment रहेगा. But even with that, when his mom passed away when she was bitten by the snake, he is saying that he took it as a special mercy of the Lord. We can understand how elevated this 5-year boy was. मतलब we are not talking about a great sage जो मतलब जिसने तपस्या किया. No, सिर्फ 5 साल का बच्चा है. And how did he attain this? जैसे प्रभुपाद ने प्रीवियस इसमें बोला था, by association of the real devotees, real association with real devotees. जब हम लोग करते pure devotees, quickly we get the result. How quick? We have seen in case of Narad Muni. So he took it as special mercy. So what does Prabhupada say? He says that confidential devotees of the Lord, मतलब जो भगवान के काफी समीप जो devotees है, जो निकट है, तो they see in every step a benedictory direction of the Lord. मतलब जो भी होता है, they say something कि हाँ कृष्णा ने he has done it for my spiritual benefit. They see that angle. Unfortunately, at least I do not see that for now. But by mercy of Vaishnavas, if I keep practicing my sadhana, at one time I would be able to see this opportunity that Krishna has given me through my hard times. So what is considered to be odd or difficult moment in the mundane sense is accepted as the special mercy of the Lord. This is how devotees think. Usually हम लोग बोलते हैं कि अरे ये इतना भगवान का करता है. Usually ISKCON के केस में मैंने बहुत बार सुना था, स्पेशली मेरे गुरु महाराज के केस में और डिवोटीज के, तो लोग यूजुअली कंप्लेन करते हैं जो ISKCON में कनेक्ट है, फिलोसॉफी पता नहीं कि ऐसे क्यों आपके भगवान ने ये नाम लेता था, आपके भगवान ने उसको ऐसा क्यों किया, तो फिर अब भगवान है क्या? सो these are the questions they ask because they do not have their fundas clear. So but devotees don't take it this way. तो वो लोग देखते हैं कि हाँ this is a special mercy that has been upon us and we should take this mercy. But as a third person devotee, my advice is we should be little sensitive about the situation. मतलब ये जो philosophy, it is good when we speak about ourselves. मतलब मेरे life में जो गलत हुआ, तो yes, this is how it is. So जब when Pooja had gone through a tough time, so this is what Pooja also realized. So she used to we used to discuss, हाँ, probably Krishna has some higher plans for us, और इसके लिए we have to go through this something. So ये आपस में ठीक है when you are with your family members or when you're talking about yourself. But when you are speaking a third person, however close friend he may be और जो भी है, we should be little careful, sensitive about the situation. उनको जाके बोल नहीं सकते अगर उनका कोई घर पे गुजर गया या फिर कुछ एकदम क्रिटिकल हुआ है, we cannot say अरे ये तो कृष्णा का मर्सी है, चल टेंशन मत ले, सब ठीक. That is not how we speak with them, even though he or she knows the philosophy. I know the philosophy, but still we should be very sensitive. Oh, this is
may Lord give you strength in this tough time, या ऐसा कुछ हम लोग we can pray for them. We'll pray for the departed soul. So this is how empathic we should be. The reason I am calling this out is because abhi I have seen in this Bangladesh situation also, which is very horrible and unfortunate. वहाँ पे some devotees, they usually say that this is we have to consider the mercy of Krishna on these devotees and all. This is a wrong understanding. We shouldn't think it that way. That वो devotees देख लेंगे जो सोचना है उनको. So for us, we should understand this situation as wrong. This is unfortunate. Wherever possible, we should raise our voice, concern, so that this situation does not repeat, for the sake of humanity. And then we should chant for them. So this is how we should do. So we should be empathic about the situation. So usually, मतलब starting में क्या होता है, हम लोग ऐसा वो philosophy के जोश में रहते हैं. And I also ended up doing this thing. I am not saying कि मैं तो बहुत smart था बचपन से. मतलब जब से even I have seen that जब मैंने कुछ मेरे friends को अगर कुछ होता था, fortunately it was not very often, एक दो बार की बात है, but I said मैंने भी ऐसा philosophy झाड़ दिया था. They kept quiet, but they did not take it well. मेरे घर पे भी ऐसा हुआ था मेरे सिस्टर के बेटे के साथ, and one devotees they came to our house and they spoke to my mother, but my mother was very upset about this. We understood it, we took it okay, fine, but my mom was not very happy with what they said, and obviously people will not be happy with that. अगर कोई आके बोलेगा अगर कि हाँ ये तो कृष्णा का ही मर्जी है, आप टेंशन क्यों लेते हो करके, it doesn't work that way. We have to be empathic also, and this is how Vaishnavas are, they're empathic. जब कृष्णा ने अर्जुन को पूरा भगवत गीता समझाया, और इतना समझा के भी जब अभिमन्यु मर गया था, अर्जुना क्राइड. कृष्णा डिड नॉट से अरे भाई अभी तो तेरे को इतना समझाया मैंने और तू रो रहा है यार, पूरा मेहनत पानी में डाल दिया. नो, इट नॉट से. ही वाज वेरी एम्पैथिक. ही स्टूड विथ हिम. ही हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड सिचुएशन. ठीक है, डोंट वरी, इट विल बी ऑल गुड, ऐसा वैसा करके ही वाज ट्राइंग टू help him come out of the situation rather than putting him into that philosophy, usko jargons डाल के. He was not worsening his emotion. So we have to be very careful about what we speak, and being in our initial phases we are very, वो काफी philosophy हमें काफी ये करता है, attract करता है कि हाँ ये ऐसा है, झाड़ू करके. So we have to be little careful about it. We have to be little sensitive about the situation. But as devotees, when this happen upon us, as sadhakas, we have to think it this way. This is very, very important. We should think it this way for us. कि I take it as a special mercy of Krishna. कभी कभार it is very obvious, हमें दिखता है कि क्या हुआ रहेगा, किसके लिए ऐसा हुआ. कभी कभी immediately report results आते नहीं है. There are many incidents in my life जो 15 साल 20 साल बाद I could see the results of it, and then I thank God. उस वक्त मुझे गुस्सा आया था. So this is how things work over there. Krishna ka planning is perfect for us, and Krishna plans. If we have the desire for spiritual, to go back to Krishna, Krishna plans perfectly for us to go back to Him. So we have to have trust in His plan. See, okay? So anyone wants to add in this slide? We'll move on to the next slide. Jay, Rakhi Mataji, do you want to read this slide? Yes, Prabhuji. Srimad Bhagavatam 1.6. After my departure, I passed through many flourishing metropolises, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forests. I passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through the tracts of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heaven, decorated with bewildered bees and singing birds. I then passed alone through many forests of rushes, bamboo, reeds, sharp grasses, weeds, and caves which were very difficult to go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Thus traveling, I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in a river, lake, and also drank water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I had learned from liberated souls.
As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead, Sri Krishna, appeared on the lotus of my heart. O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being, being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. The transcendental form of the Lord, as it is, satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable. I desired to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him any more, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words, just to mitigate my grief. Hare Krishna. Hari bol. Thank you, Mataji. You want to share something, Mataji? No, Prabhuji, Okay, kindly. Mataji, no worries. Hari bol. Thank you. So यहाँ पे let's see what Prabhupada has mentioned in the purport. So even though a mere child, he did not waste time for a single moment with economic development. Although he passed down the villages and towns, mines and industries, he focused on the progressive spiritual path. Usually हम लोग, I mean, that at some extent it is required. It is not that we should ignore it. But when we speak about great sages like नारद मुनि, तो उन्होंने कैसा किया था, 5 साल के बच्चे थे वो, but he still did not waste time or a single moment कि वहां पे जाके कुछ काम करके थोड़ा पैसा कमा लूं, एक बार सेट हो जाओ, बाद में किसी तीर्थ स्थान में जाके I will probably then think about Krishna. No, so he focused because this was mainly because he had got, I mean, he is an eternal associate of the Krishna. That is different story. But ये pastime के हिसाब से, it is because he got the association of the devotees that had made very positive impact on his life. So he did not go, he did not spend a single moment. He just went because he trusted Krishna will take care of him, and he just had that trust. और वो it was his focus was only on the spiritual path. Second point जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, प्रभुपादा जो mention कि it is a duty of the mendicant to experience all varieties of God creation by traveling alone through all the forests, hills, towns, villages, etc., to gain faith in God and strength of mind, as well as to enlighten the inhabitants with the message of God. So एक बार प्रभु ने बताते, एक प्रभु ने कि traveling makes a mind, traveling makes a man wise, ऐसा करके कुछ उन्होंने बताया. So when you travel more, it actually gives you different perception. It makes you more wiser than what you would have probably ended up being in your hometown only. So यहाँ पे भी Prabhupada is speaking on the same line कि एक mendicant, सन्यासी वगैरह, he should basically experience all the creation, should go to different places, but not just to experience कि हाँ ये hill station वगैरह देखा मस्त मजा आ गया. No, not in that sense, but to what you say, to spread, to speak about the glories of the Lord. तो वहाँ के जो inhabitants है उनको मैसेज देना. तो पहले जो आचार्यस और जो साधु हुआ करते थे, they used to travel across all the villages. हम लोगों ने सुना भी रहेगा काफी सारे संतों के स्टोरी में वगैरह. So they traveled across different places in India, और वहां पे जाके ऐसे नहीं कि while on the way they used to halt, they used to preach, they used to go, halt, preach, go. This is how they used to do. So next important point which Prabhupada says is interesting point is in this age of Kali, sannyas is forbidden for ordinary men. So this is something interesting. अभी कली युग में sannyasa is normally forbidden for ordinary men. Sannyasi should take the vow to stop social intercourse completely and devote life exclusively to the service of the Lord. So this is what a sannyasi should be. आजकल क्या करते हैं, सन्यासी का रोप तो डालते हैं, but unfortunately they don't actually follow, they don't disconnect themselves externally and internally.
मतलब बाहर से तो ऐसा दिखाएंगे वो किसी दूर रहेंगे, किसी लड़कियों से, औरत से दूर रहेंगे, लेकिन अंदर सोचते रहेंगे अरे ये लड़की कितनी सुंदर थी करके। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज नॉट हाउ सन्यासी इज। सन्यासी मतलब अगर बाहर से वो उसको माँ बोलता है तो अंदर से भी ही थिंक्स हिमसेल्फ दैट लेडी टू बी ए मदर। सो दिस इज हाउ ए सन्यासी इज इंटरनली। बट कलयुग में इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एवरीवन इज काइंड ऑफ कंटेमिनेटेड। तो इसके लिए प्रभुपादा बोलते हैं कि इट इज फॉर ऑर्डिनरी मैन, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। यू यूजुअली थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल में करते वक्त लोग थोड़ा मूड में आते हैं कि मैं सन्यासी बनूंगा, ये करूंगा, मुझे अभी थोड़ा सा कृष्णा के लिए अच्छा लग रहा है, आई विल टेक सन्यास। ऐसे बहुत लोग स्टार्टिंग में उनको वो काफी ये रहता है उत्सुकता रहती है। गुड, अच्छा है उत्सुकता, बट मिसडायरेक्टेड है। तो दिस इज नॉट फॉर देम। सन्यासी you have to have a very strong severe practice, austerities होना चाहिए, and after that when you reach that level your guru should say yes you can now take sannyas। और जब सन्यास का बोलेंगे देन सोशल इंटरकोर्स, मतलब जो फालतू की बातें सोशल में मेरा स्टेटस हो या फिर सोशल जो चीजें हैं वो उससे दूर रहना चाहिए। सो वी हैव टू टेक केयर, आई मीन we in the sense sannyasis have to take care of such things and their life should be completely मतलब completely कुछ भी 1% ऐसा चीटिंग डे नहीं होना चाहिए। जैसे डाइटिंग में होता है ना यूजुअली, they do diet and then one day is the cheat day. I don't know what is the lofty funda behind it, but one day is the cheat day. So we do not have cheat days. अगर सन्यासी के पास cheat days नहीं होते। And one more, the other interesting point is a traveling mendicant can meet the needs of the body, namely thirst and hunger, by the gifts of nature without being a beggar at the doors of the householder. The mendicant therefore does not go to the house of a householder to beg, but to enlighten the spiritually. तो सन्यासी जाते हैं घरों पे, सबके घरों पे जाते हैं बैक करने के लिए, बट प्रभुपादा यहाँ पे बोल रहे हैं उनका जो भूख है, उनको एक्चुअली जो भूख है वो सिर्फ फलों से मिट सकता है। उनको काफी कुछ, उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फलों से उनका भूख मिट सकता है। बट रीजन ही गोज टू एवरीवन्स हाउस इज बिकॉज ही वांट्स टू एनलाइटन देम। तो उन लोगों के भलाई के लिए जाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ एनलाइटन कर सके एंड देन ही कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाउस। सो दिस इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द सन्यासीस। So some interesting point about who sannyasis are and all. तो यहाँ पे दो चीज हमें पता चलता है ये वाले इसमें जो प्रभुपादा एम्फसिस करते हैं कि वन शुड नॉट मेडिटेट अकॉर्डिंग टू वंस पर्सनल विम्स। सो वन शुड क्या करे, वन शुड नो परफेक्टली वेल फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, एंड सेकेंड इज one should through the bona fide spiritual master and by the proper use of one's trained intelligence शायद मिस हो गया यहाँ पे। तो this I think is for the next one, not for the 15th. It is for the 16th verse जहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं कि using my intelligence I have learned from the liberated souls. So what is the Prabhupada emphasis? तीन चीज होना चाहिए। तो खुद के हिसाब से मेडिटेट में म्यूजिक लगा के हाँ दिस इज हाउ इट इज, मैं कृष्ण को ऐसे म्यूजिक शांति फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, कृष्णा प्राप्त होगा। नहीं, शांति फील करने से कृष्णा प्राप्त नहीं होता है, भक्ति से कृष्णा प्राप्त होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो वन शुड व्हाट ही शुड डू, ही शुड बिफोर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन ही शुड परफेक्टली नो वेल फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। पहला है स्क्रिप्चर्स, सेकंड है फ्रॉम द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड मतलब जो गुरु परंपरा को बिलोंग करते हैं, ऑथेंटिक गुरु परंपरा। और तीसरा वी हैव टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ वंस ट्रेन्ड इंटेलिजेंस। सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, ट्रेन्ड इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन्ड इंटेलिजेंस, ट्रेन्ड मतलब बेसिकली वी हैव बेसिकली गॉन थ्रू ऑल दोस दिस, और वो सब करने के बाद माय इंटेलिजेंस इज बीइंग ट्रेन्ड नाउ, और अभी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। इट इज नॉट कि अभी मैं होशियार हूँ, स्कूल में फर्स्ट आता हूँ तो मेरा इंटेलिजेंस एकदम परफेक्ट है, लेट मी डू व्हाटएवर आई थिंक इज परफेक्ट। नो, दिस इज नाउ इट इज। ठीक है। सो तीन चीजें, वन इज योर स्क्रिप्चर्स, वन इज परंपरा से आए हुए गुरु, एंड वन इज आवर ट्रेन्ड इंटेलिजेंस से करना चाहिए। सो we spoke about it. Using intelligence I learned from the liberated souls. This is what Narad Muni says. He expertly says that कि ऐसे my intelligence which is from the liberated souls, ऐसे एवे मैंने कुछ ऐसा सोच के किया नहीं है। So as soon as I begin to meditate upon the lotus, okay. So then next is when Prabhupada, when he mentions that he gives one interesting point. So he says there is no mechanical process to see the form of the Lord. So usually हम लोग पूछते हैं राइट कि भगवान को दिखते नहीं, भगवान को मेरे सामने मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। क्यों?
भगवान क्यों आएगा तेरे सामने? हमें जब हम लोग अगर मोदी को भी बोलेंगे, मोदी को सामने हो, तब भी मैं विश्वास करूंगा कि वो सही बंदा है. Why would you come? Why would you give a damn about you? यार कौन है तू भाई? So we are talking about the minister or president of the all universes. So why would he come? So there is no mechanical process to see the form of the Lord. कि अगर दूसरा चीज है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला अपने पास, सिर्फ ये करो भगवान का, सिर्फ नाम चैंट करो तुम्हें भगवान मिलेगा. There is no guarantee about it. We have to be very clear about it. But chanting of the name attracts the mercy of the Lord. और mercy is the one that gives that through which we can see Krishna. मतलब अगर आप जो मैं कर रहा हूँ वही राखी माता जी कर रही है, लेकिन राखी माता जी को 1 साल में 2 साल में भगवान दिख गए, और मैं वही कर रहा हूँ प्रैक्टिस और उससे ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान नहीं दिख रहे, तो फॉर्मूला सब जगह पे लगता नहीं है. इट इज अप टू कृष्णा, इट इज अप टू कृष्णा दैट ही विल डिसाइड कि मैं किसको किसके सामने आऊं, किसके सामने नहीं. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. So it is up to us. But does that mean कि अरे मैं तो उसका मतलब छोड़ दूं क्या? No. How will Krishna know that we want his mercy? That is when we put our efforts. And how do we show our efforts? By association, reading books, chanting. In this Kali Yuga, chanting is strongly recommended. और जब हम लोग chant करते हैं, though it may delay because it is up to Krishna, but there has been ideally no cases technically जहाँ पे chanting sincere हुआ है and Krishna did not show his mercy. ऐसे केसेस कभी हुए नहीं, कभी सुने नहीं है, कभी हुए नहीं. सिंसियर चैंटिंग की बात कर रहा. सो यू विल फॉर श्योर गेट इट, बट इट इज लेफ्ट अप टू कृष्णा. वो कब करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज अप टू हिम. So there is no mechanical process to see the form of the Lord. It completely depends on the causeless mercy of the Lord. We can demand the Lord, we cannot demand the Lord to be present before our vision, just as we cannot demand the sun to rise whenever we like. जैसे हम लोग सूरज को डिमांड नहीं कर सकते, प्रभुदा गिविंग एन वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी, वैसे हम लोग भगवान को डिमांड नहीं कर सकते. मैंने इतना किया आपके लिए, मैंने ये किया वो किया, मेरे सामने आ जाओ, क्या कर रहे हो? नो, वी कैनॉट डू दैट. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट डज नॉट वर्क. ठीक है. एंड बाद में कृष्णा यहाँ पे जब आते हैं, विष्णु जी उसके हृदय में आते हैं, ही कुड सी लॉर्ड एंड ही डिसअपियर्ड, इमीडिएटली डिसअपियर्ड. तो मतलब आपके सामने मतलब काफी टाइम से आप तड़प रहे थे कुछ खाने के लिए, गुलाब जामुन वगैरह, आपके सामने जामुन रखा है और आप हाथ डालने वाले थे, जामुन छीन के लेके गए, वैसा वाला सिचुएशन हो गया. तो आपका फुल दिमाग खराब हो जाएगा, अरे यार ये कैसा टाइप का शादी यार, खाने को जामुन भी खाने को मिला नहीं. तो हम लोग गाली बकने लगेंगे, बराबर से नहीं किया, भारत उनका स्वागत नहीं किया करके. सो विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. सो दिस इज हाउ ही उन्होंने ही सॉ थिंग विच इज द डिलीशियस ऑफ ऑल द डिलीशियस थिंग्स. So even with Madhuram, क्या वो दिव्या? Madhuram api Madhuram, right? Madhuram Madhurepi opi. So he is the sweetest of all the sweetest thing. और उसको जब नारद ने देखा, he started enjoying it. और ऐसा करने लगे, he was relishing that presence of God. भगवान वहां से चले गए, and then he started become agitated, aggrieved हो गए. He became kind of got into depression in one sense. Richa or Rohit, anyone would like to take up the slide? Hare Krishna Richa, Hare Krishna Rohit. Okay. Pooja, are you there? Can you please take up the slide? Yes. Srimad Bhagavatam 1.6. O Narada, the Lord spoke. I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material things can hardly see me. O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. By the service of absolute truth, even for few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. Intelligence intelligence engaged in the transcendental in my devotion cannot be trolled at any time.
Even at the time of creation as well as the time of annihilation, your remembrance will continue by my mercy. Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. Thus, I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of transcendental pastime of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. And so, O Brahmana, Vasudev, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna and who therefore had no attachment, being completely freed from all material things, met with that as lightning and illumination occur simultaneously. Having been awarded a transcendental body, befitting an associate of personality of Godhead, I quit the body, made of five material elements, and thus all acquired fruitive results of work, karma, stopped. At the end of millennium, when personality of Godhead, Lord Narayana, lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with creative elements, and I also entered through breathing. After Is 4.3 billion. 4.3 billion solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, and all the rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. Dibul, Hari. you want to add something, Pooja? Yeah, here it has been said that Krishna, it's like in Damodar we say that mercy and effort, two finger shot. So it was again, as discussed in last slide, it was again mercy of Lord Narayana that he came in front of Narad Muni and then he disappeared. And he told that he was not freed because he was not complete in what do you call service, and he's not complete in his incomplete in service, and not free from material tanks. So basically, just a minute. Yeah. This is the basically Krishna. It is unto Krishna's mercy that, as yesterday, as Raghuvar Prabhuji said, it is unto Krishna's mercy that he, when he wants to give darshan, he will give darshan. If he don't want, then he will not. So there is one in 10th canto, similar kind of purport is there. So in that 11th canto, sorry, in that Krishna says that he will he gives trouble for those people who are very special to him, all the material troubles, so that they get fed up of this material world and they just concentrate on Krishna. And then in the purport, Prabhupada writes that just like what it was, in cold time we hanker for hot food, and in hot summer time we hanker for cold food or cold weather or something like that. We switch on the AC. Similarly, the hankering for Krishna is like Krishna also creates opportunity to where we hanker for him. So this is a very good example where Krishna says that I want you to hanker for me, to Narad Muni. Like that is that is something which was it struck me here. Very well, thank you, Pooja. Jay, very nice. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि Krishna, the reason why he left Narad Muni, he took compassion on Narad Muni. जब वो रोने लगा, ये करने लगा कि कहाँ पे है कृष्णा करके, he again in the form of sound he spoke to him कि it is just to increase your desire for me. Suppression usually हम देखते, right?
जब कोई व्यक्ति रहता है हमारे साथ तो हम उसको वैल्यू नहीं करते, जब वो व्यक्ति चला जाता है वी स्टार्ट मिसिंग दैट पर्सन, राइट? तब वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट वेरी इंटेंसिवली एज कंपेयर टू व्हाट व्हेन ही वाज विद अस, इजंट इट? तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? And this Vipralamba Bhav, we call it Viplam in spirituality. This is what Krishna does with his exalted devotees as well, like gopis. गोपीज के केस में हम लोग देखेंगे कि कृष्णा उनको जब वृंदावन में छोड़ के गए थे, गोपीज वर कंप्लीटली विप्लम्ब, दे वर कंप्लीटली थिंकिंग ऑफ कृष्णा ऑल द टाइम, और उनका जो कृष्णा के लिए डिजायर था और बढ़ते जा रहा था और बढ़ते जा रहा था. सो दिस इज व्हाट I mean, this is why Krishna, and this is the what you say, the actual reason why Krishna left the gopis Vrindavan and went away to Mathura. This was the same reason why Shri Ram left Sita in the custody of Valmiki Dev. So that in that separation, mood of separation, भगवान के लिए प्यार जब बढ़ता है, Lord loves that separation. And usually ये जो devotees रहते हैं, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि कृष्णा राधा रानी के गोदी में सोए हुए थे सर रख के, एंड मधुमंगल वाज वहां पे पैरा देके खड़े थे, तो एक हनी भी आता है वहां पे एंड ही वाज डिस्टर्बिंग कृष्णा हियर. तो उसने राधा रानी ने बोला इसको, या कृष्णा ने बोला इसको भगा दो करके हनी भी को. तो ये मधुमंगल आया और उसने उसको भगा दिया और बोला राधा रानी को कि मधु चला गया करके. तो हनी भी समटाइम्स आल्सो दे कॉल्ड इज मधु. So Radharani started crying just by hearing that Krishna has left, and Krishna was right there in front of her, I mean on her lap, but still Radharani started crying intensely just by hearing, with the thought that Krishna has left. Her desires to get Krishna was multifold than when Krishna was with her at that time, and Krishna senses that. So he loves it when sometimes, I mean, he doesn't do it all the time in Vaikuntha, but गोलोका वृंदावन में, बट दिस इज हाउ इट डज विद हिज डिवोटीज एज वेल, कि ताकि उनका जो डिजायर है, मे इट बी मदर सीता और गोपीज और राधा रानी, और इट मे बी इवन नारद मुनि, so he gives a glimpse and he skips them, kind of separates himself from them so that they can have that hankering for him. उसके लिए वो जो भाव है वो डेवलप हो जाए, and they may think about Krishna intensely, and this will help them develop that bhakti more. और एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है कि कृष्णा बोलते कि you will be completely freed from material taint. मतलब ये जो 5 साल का बच्चा जिसकी माँ मर गई थी और उसको वो कृष्णा का मर्सी समझ के वो सब मील्स और अलग अलग जगह पे जाके इकोनॉमिक वो ले सकता था, उधर से जाके without being attracted by them, he went and concentrated on Krishna. In the whole pastime, he did not show any tinge of contamination, but then still Krishna says, it will free you from all material taints you still have, and at the time of death you will meet me. So which is very interesting. अगर ऐसे बंदे में material taints है, so what to speak about me? So there will be taints, there may be hardly any taints of purity probably. वैसा हो जाएगा, उल्टा केस हो जाएगा, reverse. So here Prabhupada says in the purport, the personality of Godhead was not seen only but only heard, does not make any difference. भगवान को देखना और भगवान को सुनना उसमें कुछ डिफरेंस नहीं. Prabhupada is making it very clear. The personality of Godhead produced the 4 Vedas by his breathing. उन्होंने ऐसा बोल के या लिख के नहीं किया, सिर्फ सांस से किया हुआ. So and he is seen, he is omnipotent, basically he is omnipotent, and he is seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, the Bhagavad Gita is a sound representation of the Lord, and there is no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental Lord. तो जब हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम लोग पूरी मतलब with complete faith, when we chant it, we will realize that there is no difference between Krishna's name and Krishna. And Acharyas and Shastras, they say that, right? There is no difference between Krishna and his name, Krishna and his pastimes. उनकी लीलाओं में जब हम लोग सुनते हैं, we are actually seeing Krishna. And Krishna and his form, उनका जो form हम लोग DT में वगैरह देखते हैं, and there is no difference between that form and Krishna. So there is no difference in any of the identities. So when we are actually chanting sincerely, which means we are actually seeing Lord in one sense.
It is because we are still contaminated, we are unable to understand that concept or realize that concept. We may hear it, but we are not able to realize कि ये क्या बोल, मतलब इसका मतलब क्या, actually मतलब क्या होता है. So with time, Krishna's mercy, we will be able to do that. But this is what it is. There is no difference at all. So when we chant, we actually are actually with Krishna. एक बार एक महाराज जी ने काफी अच्छा कहा था, when we all say that कि Krishna is a chant and Krishna is all the same, but unfortunately we don't actually realize it, we don't actually implement it. But in case of deities, जैसे deities रहते हैं मंदिर में, हम लोग चप्पल बाहर निकल के जाते हैं, we have that strong faith कि deities वहां पे भगवान है करके, यहाँ पे भगवान का वास होता है करके. But similarly in case of chanting में भी भगवान है और chanting ही भगवान है. That we are unfortunately we do not जिस तरह से मंदिर के बारे में हम लोग सोचते हैं, जो श्रद्धा है वो chanting के बारे में हमारी नहीं है. So ये श्रद्धा डेवलप करनी बहुत जरूरी है. That is with Shastras association we have to do it, and with more and more chanting. And when we do that with Krishna's mercy, we will slowly come to the stage that we would actually see no difference between Krishna and his name. We'll actually realize Krishna from his name. And here in this particular slok 26th sloka verse, यहाँ पे बोला गया कि then that supreme authority personified by sound. Yeah, Rakhi Mataji, you want to say something? No, Prabhuji, by mistake it's Okay, Mataji, okay. Then that supreme authority personified by sound and unseen by eyes. Okay, I think yes, थोड़ा ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है. So this is for okay, so I began to chant the holy name and the fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastime of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble and unenvious. So Prabhupada बोलते हैं, thus life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell. एक nutshell में devotee का life कैसा होना चाहिए 27th verse में बताया गया है. Chanting the holy name and the fame of the Lord, ये करना चाहिए, मतलब कृष्ण कथा और कृष्णा का नाम स्मरण करना चाहिए. I offered my obeisance unto him, कृष्णा को वंदना करना चाहिए. Sorry, repeating, I ignoring all the formalities of the material world. So जो material के जो formalities है, he just ignored. A devotee just ignores that and he focuses only on the chanting. And then with such chanting and remembering of the transcendental pastime of the Lord, it traveled all over the world preaching. So when it travels, when we read in the last point, right, previous point में कि जब mendicant घर घर पे आता है, किसके आता है, preach करने के लिए जाता है. So when sadhus they travel, their only objective or the primary objective is to preach about Krishna to everyone. So यहाँ पे प्रभुपादा वहां पे बोलता है कि then Krishna, Narad Muni says that ऐसा करते करते then he became freed from all material taints, and at the time of death, as lightning and illumination occur simultaneously, he was basically he directly went into the he got what you say a spiritual form. He went back to Goloka. Or Prabhupada purport में he gives an example of Dhruv Maharaj and Prahlad Maharaj, जिन्होंने इस लाइफ में भी, I mean, they did not have to wait even till death like Narad Muni. In this body, they could see Lord face to face. So Prabhupada says that they were able to see the personality of God face to face, apparently the same body. This means the quality of the devotee's body changes from material to transcendental, spiritual. तो वो लोग क्या होते हैं, devotee क्या होते हैं, when they do with respect to God. Even now when we are discussing about Krishna, we are actually transcendental. We may physically be present over here, but when we are attentively listening to Krishna, then we actually are kind of transported into the material, spiritual, what you say, world, which we are unable to realize at this point of time. But great acharyas, they do see that कि they actually see themselves in that spiritual environment. तो जैसे प्रभुपादा बोलते कि दूसरे जगह पे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, and when it is sent to a heater, it heats the environment. When it is sent to the cooler, it cools the environment, right? Same electricity है. तो उसी तरह से यहाँ पे जो एक्ट होता है, यहाँ पे एनर्जी भगवान की जो एक ही है. But when we do material things, we are being acted by the material energy.
when we do spiritual things, we are being protected by the spiritual energy. So that is very important. तो जब हम लोग यहाँ पे अभी भी अटेम्प्टली बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, we are actually being influenced by the spiritual energy of the Lord, not the material energy of the Lord. So here, according to the authorized opinion, the birth of Narada as the son of Brahma is also transcendental pastime. His appearance and disappearance are practically on the same level of that of the Lord. The Lord and his devotees are therefore simultaneously one and different as spiritual entities. They belong to the same category of transcendence. क्योंकि यूजुअली हम लोग बोलेंगे कि ये पिछले कल्प में नारद मुनि तो ठीक है वो मर गए, तो ये कल और स्पिरिचुअल फॉर्म उन्हें अटेंड कर लिया, ठीक है, you had been awarded with a transcendent body, ऐसे वर्स नंबर 29 में लिखा हुआ है, 29 में, yes. So ऐसे होते हुए, then how is that possible that Narad Muni again took birth through Brahma? What is the logic behind it? So Prabhupada explains this. It is basically he is now, his birth and death is now as transcendent as Krishna. He is matlab he and other pure devotees, they are as transcendental as Krishna. तो उनका जो birth and all, they seemingly look like they are like in the material sense, but they are all spiritual. जैसे मान लो रुद्र की बात करें, रुद्र शिव जी है, ब्रह्मा के क्रोध से आए थे, right? But when if we know technically शिव जी is eternal, Brahma in fact actually dies after his 100 years and new Brahma comes, a new soul, but Shiv is eternal. But for the sake of performing some pastime in this world, material world, they come in different forms. Like Krishna, he came as through Devki, या फिर अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, कभी पिलर से जन्म लेते हैं. भगवान के लिए माँ का कोख की जरूरत नहीं है, he come through the pillar also. So there is no any specific material law, nature's law that Lord has to follow. He can come from anywhere, anything can be done. In some Puran it is mentioned that he once came through the Shivlanga. तो किसी जो डिवोटी था, एक शिव का भक्त था, but he was arrogant and he did not have pujari that day, so Vaishnava was traveling by, उसको पकड़ लिया और उसको शिव जी के बारे में पूजा करने बोला. तो वैष्णव बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ब्राह्मण ने बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि नारायण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, मैं ऐसे दूसरे किसी को श्रेष्ठ कैसे बोल सकता हूँ. बोलता कर, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा. तो वहां पे वो नरसिम्हा की पूजा करने लगे, नरसिम्हा का मंत्र करने लगे in a different way that this person, because he was, I mean, arrogant, that so हम लोग समझ सकते हैं कि he was not actually a devotee even of Lord Shiva in true sense, like Ravana. वो लोग they claim themselves to be devotee of Shiva, Ravana and all, but they are pure, as Prabhupada says, rascals. वैसे ही है, अगर किसी का पूजा करते हो, भक्त करते हो, तो उनके बीबी के आप बुरी नजर नहीं डालते. Ravana asked Shiva for Parvati. Is this what a devotee is called? I mean, can we call such a person a devotee? And unfortunately उसने वो जो शिव तांडव लिखा है, and that is why we should preferably avoid such things written by such people, demonic people. Even though it may sound good, he may have done it for the praise of Shiva, but in a wrong mood. So this is something that should be avoided. अगर एक devotee करता है, and if you want to hear something about Shiv ji praise, then it should be from a pure devotee of Shiva, not from such rascals. So we have to be little careful about it. So here again coming back to the topic, Narad Muni ka, so they all perform different pastimes, अलग अलग तरीके से बात है. So similarly Narada also came from Brahma in this kalpa, Brahma ka kalpa, through as Mansa Putra. But we have to understand he is the eternal associate of the Lord, and he is with a transcendental body. Okay? So that is the understanding we should have with this pastime as well. जब वो छोटा बच्चा था, this is just leelas which devotees are performing for people like us, so that we can be purified when we hear that. They can set an example for us. So यहाँ पे duration of life of Brahma is 4.3 billion, जो हमने देखा था. So this is stated also in Bhagavad Gita. So for this period, Brahmaji rests in yoga nidra within the body. तो यहाँ पे जो 30th वर्ष में लिखा हुआ है, क्या बोला गया है? When the personality Lord Narayana, personal God Narayana, lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all created elements, and I also entered along
through his breathing. So ये जब ब्रह्मा का एक कल्प होता है, वहां पे partial destruction होता है एक कल्प के बाद. So there is a partial destruction, and in that time Prabhupada says that in this period जब वो रात को सोते हैं, partial destruction रात को सोते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन 4.3 बिलियन है, 4.3 बिलियन है, ब्रह्मा का रात भी उतना ही 4.3 बिलियन है, और वापस ब्रह्मा का दिन 4.3 बिलियन है. सो इस तरह से जब उनका रात जो होता है, रात वाला कल्प जो रहता है, उसको कल्प बोलते हैं वो पीरियड को. सो वो जो है ब्रह्मा का रात वाला कल्प, वहां पे ब्रह्मा, इट इज शास्त्र टेल अस दैट ब्रह्मा रेस्ट, ही गोज इन निद्रा, योग निद्रा. और वहां पे वो गर्भोदक्षा विष्णु, मतलब जिनके पेट से, नाभि से कमल आता है, उनके अंदर जाके वो सो जाते हैं, ठीक है, उनके शरीर में सो जाते हैं. And thus, after sleeping period of Brahma, when there is again creation by the will of the Lord, through the agency of Brahma, all the great rishis also appear from different parts of the transcendental body, and Narada also appears. तो इसलिए सेकंड कल्प में वापस नारद मुनि उनके साथ आए, बट नारद मुनि रिमेंबर्स एवरीथिंग. सो नारद मुनि वाज लाइक इन एन हाइबरनेट स्टेट. जब वो भगवान के अंदर गए और वापस जब बाहर आए, ही कुड रिकलेक्ट एवरीथिंग, एंड ही वाज बैक एज इफ अंदर जाने के वक्त का जो मेमोरी और जो कॉन्शियसनेस था, वही कॉन्शियसनेस से कंटिन्यू हो गए. किसी को कुछ क्वेश्चंस, एनीथिंग ऑन दिस स्लाइड, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? जी. Richa or Rohit, anyone would like to take up the slide? Yeah, Hare Krishna. Hare Sorry, Krishna. उस समय वो दर्श को मैं सुला रही थी. No, no worries. Yeah, we can understand. No worries. Since then, by the grace of Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord, and thus I travel constantly, singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called Veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart, and if called for, as soon as I begin to chant his holy activities, it is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. It is true that by practicing restraint of the senses or by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust. But this is not sufficient to give satisfaction to the soul, for this satisfaction is desired from the from devotional service to the personality of Godhead. O Vyasadeva, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. Sutta Goswami said, thus addressing Vyasadeva, Srila Narada Muni took leave of him and vibrating on his Veena instrument, he left to wander at his free will. All glory and success to Srila Narad Muni because he glorifies the activities of the personality of Godhead, and so doing he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. Very well. Thank you, Richa. You want to add something, Richa? So here Narad Muni is telling Vyasadeva that by his own experience, he can say that those who are always chanting the glories of the Lord and chanting his name, then God personally comes to see them. But those who are freed from all kind of lusts and desires, and those that can be done by practicing the yoga system, and also more than that, the chanting of
the holy name and the chanting of the glory, transcendental activities of the Lord is most pleasing to the Lord. And that he tells that, and then he leaves. हरी बोल. Thank you, Richa. Very nice. यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है. 36th वर्ष में उन्होंने बोला कि इट इज ट्रू दैट बाय प्रैक्टिसिंग from the disturbance of by practicing the senses of restraint of the sense of yoga, one can get relief from the disturbance of desires and lust. मतलब lust desire से relief मतलब basically you don't feel angry, jealousy नहीं है. मतलब जो अभी हम लोग काफी डिस्ट्रेस फील करते हैं, ऑफिस का जो इश्यूज हो, ये हो वो हो, जो भी हम लोग के डिजायर है, और इसके बारे में इसके वजह से इट इज ऑल, आई मीन वी आर काइंड ऑफ अचीविंग लेट्स से पीस ऑफ माइंड. बट नारद मुनि सेज कि वो अटेन करने के बाद भी इट इज डज नॉट गिव सेटिस्फेक्शन टू द सोल. सो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट डज नॉट गिव सेटिस्फेक्शन सोल. मतलब हम लोग कभी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल योगा बोलते हैं कि हम लोग को पीसफुल लाइफ ये चाहिए, वो चाहिए, पीस मिलता है. But it may give peace, but at the end of the time you will even get bored with it because you are not satisfied. This is not what you want. You will not get completely satisfied it. So what satisfies your soul? That is bhakti. जब हम लोग भक्ति करते हैं भगवान के, that is what satisfies a soul. यहाँ पे कुछ प्रभुपाद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोले हुए हैं कि वीणा के बारे में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कोट किया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है प्रभुपाद ने. सो म्यूजिकल स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वीणा which was handed to Narada by Lord Krishna described in Ling Puran. This is confirmed by Srila Jiva Goswami. So Srila Goswami उनके किसी संदर्भ में उन्होंने बताया रहेगा कि लिंग पुराण में उसका वर्णन है जहाँ पे कृष्ण स्वयं ये वीणा नारद मुनि को देते हैं. And this transcendental instrument, Krishna देते हैं मतलब transcendental, it cannot be material. This transcendental instrument is identical with Lord Krishna and Narada because all of them are also of the same transcendental category. So जब कृष्णा कुछ देते हैं, it is transcendental like Krishna, and because of that they are of the same transcendental category. So यहाँ वीणा से जो आने वाली आवाज है जो वो that is also transcendental, it cannot be material sound. That is what we can understand. And we spoke about Maya. In the last session we spoke about दुर्गा देवी का, ये करते नवरात्रि का, हम लोग माया के बारे में डिस्कस किया था. तो ये परपट में Maya ka, there is one more beautiful definition. This is called Maya, or what is not. That which cannot give them satisfaction is accepted as an object of satisfaction. इसको माया बोलते हैं. जो हमें satisfaction दे नहीं सकता. If you see around, almost all the things cannot give us eternal satisfaction. वो थोड़ा सा time being थोड़ा सा टिचकू मार के जाएगा. थोड़ा बीच में it will give us some kind of joy and all. Or pervert, whatever we may call it, joy या perverted में joy जो भी है, but it is never eternal. But we think that object to be the source of our enjoyment or source of our joy or satisfaction. So this is Maya. This is what Maya does. जो चीज नहीं है वो चीज ऐसे पकड़ के हम लोग बैठे. This is called illusion. So that was one interesting definition that Prabhupada gave in this particular purport. So Shri Narad Muni plays on his instrument to glorify the transcendental activities of the Lord and gives relief to all the miserable entities of the universe. No one is happy here within the universe, and what is felt as happiness is Maya's illusion. The illusion energy of the Lord is so strong that even the hog who lives on filthy stool feels happy. No one can be truly happy within this material world. So this is something very interesting. यहाँ पे acharyas and everyone, and we all can agree to it. यहाँ पे truly happy हम लोग कभी नहीं होते. Happy थोड़ा सा इधर उधर से तो कुछ कभी कभार थोड़ा सा ये feel थोड़ा सा spark लगा ऐसा लगता है. But otherwise we cannot be truly feeling happy in this material world. And Prabhupada is saying, he's giving an example of a hog. The energy of the Lord is so strong that even the hog who lives on filthy stool feels happy. And this we have seen to that example. हम लोगों ने शायद पहले discuss भी किया था इंद्र का, जब he was cursed to become a pig. He used to
he used to mate with the female pig all the time, have children and eat stool, but still he enjoyed it. और जब उन्हें ब्रह्मा ने वापस लेने के लिए बुलाया था, he said, no, I am happy here. Why should I come back? मतलब we understand, we are talking about the king of the heaven, और यहाँ पे talking about pig, but everyone is happy. सबको लगता है कि मैं खुश हूँ ये चीज को देखे, and that is what is called is Maya. So even we all think, right, नहीं मेरा life तो अच्छे चल रहा है, मेरे family member अच्छे है, मेरा job set है ये. So this is the play of Maya, where we are completely convinced that we are happy in this material world. That is Maya. So any questions, anything you want to share? Anything? Jay. So, yep. Yeah, Mataji. Prabhuji, very wonderful to hear this, all the leelas and kathas. Hari bol. Bhagavatam, Mataji, it is full of nectar. I mean, we are. Trust me, I read this earlier. सबने से पहला canto, 1.5 canto खत्म किया था. So when I read it, the way I am enjoying when I am discussing with all of you is different. I mean, तभी से पढ़ा था ठीक था, but now we are discussing, we are kind of studying this Bhagavatam, and we are actually relishing it. So yes, Mataji, Bhagavatam has to be studied, it has to be listened attentively, and it is really relishable. True, Prabhuji. I mean, in between, we don't feel like, discussing, just keep on listening. Yes, Hari bol. Mataji, it is wonderful. Haribol. Satish Prabhu, are you around? Yes, Prabhuji. Yeah, Prabhu, सोहम है क्या आपके पास? हाँ है ना. मैं नरसिंह आरती के लिए उसको बाद में बुलाऊंगा माताजी. प्रभु. Okay, Prabhuji. Prabhu, you want to take this? Yeah, Pranam sure. mantra. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Prabhu, you can take this offering prayers also, or should I ask Monica? No. Mataji? Okay. You want to do, Prabhu? Please go ahead, Prabhu. Yeah. नमो महावदनाय कृष्णाय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः गौरत्वेषे नमः. नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्माण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. Hari bol. So we will ask this to Monica Mataji. Do you want to try this? Hare Krishna, Monica Mataji. अच्छा, रिचा रोहित है क्या उधर? उसका आवाज सुना नहीं आज. If he is free, then he can take this up. थोड़ा उनको बैक में पेन हो रहा है तो वही लेटे हुए हैं. Okay. Then you want to try, Richa? Yeah, this one, right? Yeah, Prasadam. महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते शरीर विद्याचाल ज्योतिन्द्रिता हे काल जीवे फैले विषय सागरे तारा मध्य जीवा आति लोभमय सुधर्मति ताके जिता कटिम संसारे कृष्णा बोरोदोय मोय कोरी बारे जीव जाय सो प्रसादे अन्न दिलो भाई से नमत पाव श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम दाके चैतन्य निताय. Hare Krishna. Hari bol. Thank you, Risha. Hari bol. Soham, are you ready? हाँ 1 मिनट प्रभु जा रहा है. हाँ ठीक है. नरसिंह माती के क्लास मध्ये. प्रभू कॅमेरा ऑन करू शकता तुम्ही. हरे कृष्णा सोहम. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Soham. हरे कृष्णा प्रभुजी. बोल. Have to read? हाँ नरसिंह माती. Okay. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादयादवालिने हिरण्यकशिपुवशः श्रीलकण्ठालकालाये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत यामि ततो नरसिंहा महे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये
तब कर कमल बहे नाखा अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु परतिंगा केशबरी था नरहरि रोपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। सोम की जय। वेरी नाइस सोम। जय जय, ब्यूटीफुल। जय। सो एनी क्वेश्चंस, किसी को ऐड करना? else I will stop the recording. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।